All right, let's cut across to the state of Maharashtra, where the 288 assembly seat election polling today till now 9 a.m. viewers. Disappointing voter turnout, 6.6% voting turnout in Maharashtra till 9 a.m. Voting in many areas brisk, but in many areas very, very sluggish. Big ticket faces have come out early this morning. Supriya Sule, Sharad Pawar, Ajit Pawar, Pawar versus Pawar, the entire clan coming out to vote early this morning. In terms of Bollywood celebrities where Mumbai is concerned, early voters Akshay Kumar, Farhan Akhtar, Ritesh Deshmukh, all of them coming out to cast their vote. I want to cut across to my colleague Devesh Singh, who's joining us from Mumbai. Devesh, overall voting percentage in Maharashtra disappointing till 9 a.m., 6.6%, and in all probability the apathy of Mumbai continuing lower in the metropolitan city of Mumbai as well, with all its seats. Well, Preeti, in the general elections also it was witnessed that only 50% voting had happened in Mumbai, while the percentage for the state was about 60%. But Mumbai residents had voted in fewer numbers, and in the general elections too it was at 50%. Here right now we are present at the Anushakti Nagar constituency in Devnar, Mumbai, at the Tata Institute of Social Sciences. But we can see over here that senior citizens, people of the higher age group, are coming in large numbers, coming in early to cast their vote. But youngsters are nowhere to be found. Youngsters cannot be seen. There are very few youngsters who have turned up to cast their votes as of now till 10 a.m. In Mumbai. It is expected that the voter percentage could rise in further hours, but only senior citizens and people from the higher age group, upper age group, are coming out and casting their vote at various polling booths across Mumbai. Preeti. All right, Devesh, stay on with me. Right now, sluggish voting where Mumbai is concerned, but even all across Maharashtra, it doesn't look too good. It should have been about 10% by now. Even if you look by 2019 standards on how Maharashtra voted, will it pick up? Well, right here in India today, we urge the voters of Maharashtra, of Jharkhand, all the by-polls that are voting today to go out and vote in large numbers. It doesn't look promising, at least where the Maharashtra voting percentage coming in about 4% less than the last time on what was recorded at 9 a.m. in 2019 Maharashtra elections. Go out and vote where Maharashtra is concerned. But one thing is very clear, viewers. Like I mentioned earlier, there are some elections which are important. All elections are important, but some seemingly more important than the others. In Maharashtra is that one big ticket elections where money is concerned, where political power is concerned, and just the expanse of it. 48 Lok Sabha seats. We saw what happened during Lok Sabha. It's been a fight to the finish. And when I say a fight to the finish, right down to the wire. Late night, you had charges, being leveled from either sides of the political divide. If there was a allegation of cash for vote, which BJP found itself smack in the middle of. Late night, you had a press conference where the BJP has made a stunning charge of a Bitcoin scam involving Nana Patole and Supriya Sule. So there's a lot going on. All of that only highlights one point, the importance of the state of Maharashtra. Let's cut across right now to our guests this morning. Joining me, Amitabh Tiwari, political strategist, commentator, election analyst and researcher. Pradeep Bhandari, national spokesperson, Bharatiya Janata Party. Anish Gawande, spokesperson, NCP, Sharad Pawar faction. Matthew Anthony, national spokesperson, Congress. Anish Gawande, let me begin with you. All right, let's listen into Vinod Tavre, who found himself in the middle of a cash for vote scam. Listen in. नेहमीच मला असं वाटतं की माननीय शरद पवार साहेब एक मॅच्युअर्ड राजकीय नेते आहेत, खूप सिनियर आहेत आणि ते मला तर खूप जवळून ओळखतात. त्यामुळे अशा ह्याच्यात मी असू शकत नाही, त्यांना माहिती आहे आणि त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद. मैं कल वहां नाला सोपारा जाने वाला हूं, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि मैं वाड़ा से लौटते समय उम्मीदवार राजन नाइक को फोन किया, कैसे चल रहा है, उसने कहा हम कार्यकर्ता बैठे,
चाय पे आ जाओ। अब कार्यकर्ता बैठे तो 10-12 बैठे, ऐसा मानकर मैं वहां चला गया। इसलिए ये किसी की साजिश नहीं, कोई कारण नहीं और ऐसा कोई आपसी झगड़ा भी नहीं। और मेरा मानना है कि एक राजनीतिक घटना का लाभ लेने का प्रयास विपक्ष ने किया, क्योंकि वो हार रहे हैं और जब पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं मिला तो फिर भी ऐसा कहना ये गलत है। इशारा किया संजय राउत ने बगैर नाम लिए, वो झूठ बोल रहे हैं। मालूम था और गृह मंत्री ने किया होगा, इस तरह से संजय राउत का इशारा था। पूरा गलत है, पूरा झूठ है। मुझे ही नहीं मालूम था मैं जाने वाला हूँ। जो तय हुआ 2 मिनट पहले तय हुआ। ये तो वहाँ कल थे, देख रहे थे, तो मुझे मतलब मेरा आना हुआ बहुत अचानक हुआ कि निकल बोले आ जाओ चाय के लिए। मुझे लगा 10-12 लोग हैं तो मैं अंदर गया और मैंने वहाँ क्या बोला ये रेकॉर्डेड भी है सब जगह, तो कोई दिक्कत नाही। तुम्ही म्हणतात की सुप्रिया सुळेने तुमच्यावरती 5 कोटींचे आरोप लावले, त्यात सुप्रिया सुळेंवरती काल रात्री तुमचे प्रवक्ते असलेले सुधांशू त्रिवेदींनी क्रिप्टोकरन्सीच्या संदर्भात आरोप केलाय। ऑडिओ क्लिप्स व्हायरल होतात, नाना पटोले, सुप्रिया सुळे यांचे आयपीएस ऑफिसर आहेत रवींद्र पाटील, त्यांनी देखील या सगळ्या संदर्भातचे आरोप लावले। मला असं वाटतं की ठोस माहिती अधिकृत मिळाल्याशिवाय सुधांशू त्रिवेदी कधीच पत्रकार परिषद करत नाही, हा माझा त्यांच्याविषयी अनुभव आहे। सुप्रिया त्यांनी आपलं म्हणणं मांडलेलं आहे की याची चौकशी करा, तर मला वाटतं चौकशी होईल, त्यात वास्तव बाहेर येईल। माझं मत आहे की जे आरोप आपल्यावर होतात त्याविषयी चौकशी तर झालीच पाहिजे आणि चौकशीचा जे बाहेर येईल। पण सुधांशू त्रिवेदींचा माझा अनुभव आहे की ते असे राज्यसभा सदस्य आहेत की जर ठोस माहिती नसेल। सर एआई जनरेटेड ऑडियो था, सुप्रिया सुले का हो या फिर नाना पटोले या फिर अमिताभ गुप्ता का, उस ऑडियो में विनोद तावड़े जो पैसे के मामले में वहाँ पकड़े गए थे, उस चीज को दबाने की एक कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। मैं पकड़ा ही नहीं गया, मेरे पास पैसा मिला ही नहीं, तो दबाने की बात है क्या उसमें? चला धन्यवाद। All right, Vinod Tawre there. Yesterday, the BJP General Secretary was allegedly caught with cash in a different constituency. There are FIRs there as well. Massive allegations coming in from the Agadi. 2 FIRs. One also against the local BJP candidate as well, where the recovery of just about 10,000, less than 10 lakhs, 9,90,000 rupees, which was recovered from the hotel where Vinod Tawre was in. On the other hand, Vinod Tawre himself, there is an FIR against him for violating the Model Code of Conduct from illegally being in a constituency which he should not have been after the Model Code of Conduct had set in. Nana Patole, they're voting this early morning, but like I said, viewers, there's a lot going on because late night, grave allegations. Let's listen in for reactions that are coming in. All right, Piyush Goyal casting his vote as well. We'll continue to get you political reactions on the story. All these visuals filtering in early this morning. But like I pointed out, viewers, there are charges against charges. If there are FIRs against Vinod Tawre, you heard Vinod Tawre early this morning. He says, let the EC investigate fairly on what went down yesterday. He's charged the Maha Vikas Agadi for leveling baseless, bogus allegations. On the other hand, the BVA has made it very clear that they caught a diary on his person and money which was lying in a sack next to him. That is a matter of investigation. But on the other hand, late last night, viewers, the Bharatiya Janata Party conducted a press conference giving out certain audio clips leveling grave allegations on a Bitcoin scam involving Nana Patole and Supriya Sule. Let's quickly cut across and go to our guest this morning, Pradeep Bhandari, National Spokesperson, Bharatiya Janata Party, as well as Anish Gawande, Spokesperson, NCP, Sharad Pawar faction, joining us this morning. Anish, to begin with you, if you look at it, you've had now this morning Mr. Ajit Pawar, the brother of Supriya Sule, come out and clearly suggest that this is Supriya Sule's voice in the audio clips where the Bitcoin allegation is concerned. No, firstly, good morning, and I'm glad we're still having these discussions, but I'm also disappointed because I thought election campaigning was over, and on the morning of voting day, we'd at least be done with these
allegations and counter allegations, but here we are. I think it's very clear to anyone who's heard these videos that it's not Supriya Tai's voice. It's a really badly done AI job. And Ajit Dada is a very senior leader. He's a senior politician, but he's not very tech savvy. And I don't think he's realized what an AI hit job looks like. But these are laughable allegations. And, we filed a defamation suit and another criminal complaint about them. The fact that they emerged at 10 p.m. last night is evidence enough how seriously they should be taken. But I think it's 10 a.m. on voting day. I think we should keep these allegations, counter allegations aside and encourage people to go out and vote today, because people like me have just woken up slightly late, going to the polling booth slightly late. And the time for campaigning is over. People have already made up their minds. And these allegations should now be sorted after voting day is over. All right, the allegations need to be sorted, but like I said, when the stakes are high and the returns are higher, charges like this, an intensely, desperately fought political narrative will come to light, and that is what we are witnessing from either sides of the divide. Viewers, Pradeep Bhandari from the Bharatiya Janata Party also joining us. Pradeep Bhandari, the charges are that all of these allegations, all of these audio clips that were given out late last night by the Bharatiya Janata Party is nothing but diversionary tactics to try and get the voters' attention away from what was, or seemingly in terms of allegations, an obvious vote for cash for vote scam involving Mr. Taude. Well, Preeti, first of all, through you and India Today, I would appeal to viewers and voters in Maharashtra, in particular Mumbai, to go out and vote in large numbers. Right now, the voting percentage is disappointed, and let's hope that it picks up. Well, my friend Anish spoke about the tech savviness of Ajit Pawar. I can say he's as tech savvy as Supriya Sule is. Now, the timing of the crime does not determine whether the crime is honest or not. So it's a matter of investigation, and these respected audios were reported by two news agencies. So we take the news agencies on face value, and it has been reported by journalists. And I believe that journalists definitely do a check and counter check before publishing a story. So Anish is rattled in the morning because he understands that this is the tip of the iceberg of corruption. Now, on the part of Maharashtra, Preeti, we are very confident that we will be forming a comfortable majority government, and the logic, and there are just three principal reasons. A, if you look at all 75 seats where we are going head to head with the Congress party, we are confident to win at least 70% of those seats. And as per a lot of analysis which I was seeing on your channel and your colleagues Rajdeep and others, they say that if Bharatiya Janata Party is able to get more than 60% of the seats in a direct fight with the Congress party, then the Bharatiya Janata Party has an edge. So our ground report suggests that even as of right now, as I speak, that we will be forming the government and we will be leading in the head-to-head contest with Congress. Number two, this is an election of welfare, this is an election of development, and we are confident that the women of Maharashtra, in particular those who will receive the benefits through Ladki Behna Yojana, will vote a pro-development government. And number three, even the India Today report in your channel report was suggesting that Mr. Eknath Shinde is a popular chief minister and there is a Shinde factor. This is what a lot of reporters on the ground are saying and anchors are saying on the ground. So we have also a popular chief minister. On the top of it, we are very popular prime minister. So let the results come on 23rd. Okay. We do hope the voting picks up. On the part of the allegations, I believe it's a matter of investigation, and Supriya Sule should be open to an investigation on Bitcoin scam. Well, all right. Well, everybody needs to be open to an investigation, including Mr. Vinod Tavle, who he has said that the EC should investigate fairly on what really went down in terms of those visuals yesterday. So it's one charge versus another. At one end, audio clips released late into the night by the Bharatiya Janata Party, allegedly involving Supriya Sule, Nana Patole in what they call as a Bitcoin scam. Listen to Nana Patole. मतदान करावं हा अधिकार आहे आणि यांनी ज्या पद्धतीने वोट जिहाद हा शब्द वापरला तर भाजपचा नोट जिहाद आहे का हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झालेला आहे आणि अशा या परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या सुजाण जनता ही महाविकास आघाडीलाच मतदान करेल हा आमचा विश्वास आहे येत्या 23 तारखेला महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आणि ते बहुमताने येणार 200च्या पार महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचे आमदार निवडून येतील तुम्ही मुख्यमंत्री होणार का तुमची इच्छा आहे का बघा आता मला महाराष्ट्र वाचवणं हा आमच्यासाठी प्रत्येकाला कर्तव्य आहे महाराष्ट्र गुजरातला विकला जातोय महाराष्ट्र गुजरातला गहाण ठेवला जातोय आणि एक है तो सेफ है हा जो प्रधानमंत्र्यांचा जो नारा होता त्यांचा उल्लेख राहुलजींनी त्याचा स्पष्ट केलेला आहे की फक्त
सेफ म्हणजे तिजोरी, या राज्याची तिजोरी. First up, I want to quickly cut across to Amitabh Tiwari, political strategist, commentator, election analyst. But Amitabh Tiwari, you are from Maharashtra. Would you quickly translate for us on what Nana Patole said? I don't understand that much Marathi. That much Marathi. Being a migrant there. So All right. that's also a factor in this election. That is also a factor in this election. That is a big factor in Mumbai, as migrants make up 43% of population, and migrants... Of the 36 seats. Yeah. Only 36 seats, right. and there is a migrant versus non-migrant also playing around in Mumbai. So we'll have to wait and see how this unfolds. The Maha Premier League has started. We see the turnout very low. It's actually half of what the Jharkhand turnout is till 9 o'clock. You're right there. And 4%, Amitabh Tiwari, lesser than what it was in 2019 at this point of time. Yeah, so the turnout is low. All these allegations, the political upheaval which has happened, I think is going to increase the percentage of nota in this election. In 2024 Lok Sabha election, on 8 seats in Maharashtra, 8 Lok Sabha seats, the nota finished as the second runner-up, or it was and one of the seats I actually went to, and that is the seat of Gadchiroli, where actually Nota finished as, second. Yeah, you're right in that sense. But Amitabh Tiwari is right. But Amitabh, to pull you in on a larger question, which we've been tailing very, very closely, 75 direct fights where it comes down to the Bharatiya Janata Party versus the Congress in the state of Maharashtra. Those 75 seats will be watched critically at this point of time and could be the decider in this election. Coming back to you, let's get in political reactions. Piyush Goyal right after voting. इतना स्मूथली पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं, लाइनें लंबी हैं उत्तर मुंबई में खास तौर पे, लेकिन किसी को असुविधा नहीं है। ये देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग होगी। मेरी अपील है सभी से कि सब लोग उतरें। ये वोट मात्र एक वोट नहीं है, हमारे आगे वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र और मुंबई का भविष्य आप उसके शिल्पकार बनने वाले हैं। मुंबई को अच्छी सुविधाएं मिले, मुंबई का भविष्य उज्जवल हो, हर मुंबईकर को आगे चलकर एक अच्छा जीवन देने का काम आपका एक वोट कर सकता है। मैं सभी को अपील करता हूं कि आप अवश्य वोट डालने जाएं। शाम को 6 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी और जितनी बड़ी संख्या में हम सब अपने मत का, अपने अधिकार का पालन करेंगे, मुझे विश्वास है उतना ही अच्छा मुंबई, उतना ही प्रगति महाराष्ट्र की आगे बढ़ेगी, गति मिलेगी और हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ महाराष्ट्र का अग्रसर स्थान नंबर 1 स्टेट जो महाराष्ट्र है उसको हम आगे भी नंबर 1 बनाए रखेंगे। ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। और जिस तरह से बीजेपी ने आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए एक होटल में, जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते, जो चुनाव आयोग के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया। और वो कहते कि चिट्ठी बांटने गए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चिट्ठी बांट रहे हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास अब नीचे में कार्यकर्ता भी खत्म हो चुके हैं, उसका अर्थ वो लगता है। तो मुझे लगता है कि अब झूठ पे कितना झूठ बोलेंगे। और वो देवेंद्र फडणवीस के पीए रहे वाले वानखेड़े जो आरवी विधानसभा से वर्धा से खड़े हैं, उनके गोदाम में दारू की बोतल मिली। वर्धा ये दारूबंदी का डिस्ट्रिक्ट है, तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या वोट मांगने के लिए? ये सवाल इस बहाने खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती, जो बार बार हम कह रहे थे कि किसी ने किसको वोट करना वो उनका अधिकार है, उसको ये वोट जिहाद बोलते हैं। फिर कल ब्राह्मण लोगों ने महाराष्ट्र के उनने भी कल डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी को वोट करो करके। तो इसका मतलब क्या होगा? उसको भी ब्राह्मण जिहाद बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या चल रहा है क्या महाराष्ट्र में? जिसको किसको वोट मारना है वो उनका अधिकार है, लेकिन उनके अधिकार का हनन करने वाले बीजेपी
आज पैसे बांटकर और दारू बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये क्या नोट जिहाद है या दारू जिहाद है? आपका मुख्यमंत्री हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? बिल्कुल महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा और बहुमत में सरकार महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में आएगी। आपका नाम फिर से एक बार चर्चे में है, बिटकॉइन स्कैम में आपका नाम लाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि All right, Nana Patole there speaking to the media with all the charges that have been flying thick and fast till late last night. But let's just focus on this election and the importance of it. And for a moment, as I bring in Amitabh Tiwari and Professor Badri Narayan, columnist and political analyst, to reflect on what the voting percentage signifies till now. It's 6.6%. If you need to go back all the way to 2019, at this point of time, 9 a.m., it was 4% more. We are way beyond Amitabh Tiwari on what would traditional psephology suggest, because whatever till now traditional psephology suggests, most elections have gone the other way. So asking you a question, would this voting percentage bother the Bharatiya Janata Party right now at a 6.6%? Too early to say, but would it be a niggle? So it is too early to say. However, because of the political upheaval in the last 5 years, the voters are confused, because they do not know whether the candidate or the party whom they are going to vote for will remain with MVA or will shift to Mahayuti. Because anything can happen in Maharashtra in a post-poll realignment, and only the BJP and the Congress cannot join together. All other options are available. And all these charges of distribution of cash, Bitcoin scam, would only deter the urban voters not to come out and vote significantly. The percentage of nota could also increase. However, the impact of a low turnout on an electoral verdict, there is no direct correlation, and we'll have to wait and see how the numbers pan out. You're right there. Professor Badri Narayan, want to reflect on the voter turnout, because it is too early to tell, but could have been about 4% more if you're just looking at 2019 standards. I think we should hope that voting percentage will increase, because we are very right that this may be the confusion, but also the socio-cultural character of the Mumbai. This corporate, this cosmopolitan cities. So people may get up and they will come for the vote. We should hope. But democracy, electoral democracy always create confusion. But even then, in that confusion, voters opt their options and go and vote for that. So we should hope that they will come and vote, and slowly this voting percentage will increase. But the changing character of the city, changing character of economy also reflect voting percentage. It's not only it's a kind of secluded kind of attitude, political attitude. So we should hope that it should increase in coming time. All right. I want to cut across to Matthew Antony, national spokesperson, Congress at this point of time, because as we say, there are 6 regions in the state of Maharashtra, and what we're going to see is a contest not in one state, but possibly 6 regions having a very different local, hyper-local election. And, most of us reporters who've been on ground, we've seen it change completely in terms of what the issues are. You cross from Vidarbha to Marathwada and you see the political landscape completely change in terms of what the issues are. You go down to western Maharashtra, it completely changes. You go across, to the Konkan belt, where Konkan, Thane, completely different issues. So 6 elections in one election is something that must be coming out of your ears by now, because most political analysts continue to stress on the same. But one region, they say, could be, we are freshly coming out of the US elections and could be the swing region this election, and that is the region of Vidarbha. Out of the 75 direct contests between the Bharatiya Janata Party and the Congress, 75 direct contests in this election. 36 of those lie in this very region on the 60 seats. 60 seats in Vidarbha. 2019, of course, the political dynamics were very, very different at that point of time. So we are not looking at that, because a lot has changed where Maharashtra's politics is concerned, where alliances and parties breaking up. But Vidarbha is one particular region that everyone will be looking at very closely. 36 of the direct fights of the 75 between BJP and Congress will be fought on the battleground of Vidarbha. And Matthew Antony, the big question here is, in 2024, you made massive gains in the Lok Sabha elections in this very region. Many political analysts this time feel that you could dent it because your candidate selection wasn't on cue.
Preeti, let me come to your question after a few points, which was there in the discussion right now. You said about Supriya Sule's voice note, whereas we have seen in video very clearly about Vinod Tavde's display. Matthew Anthony, would you? I'm going to interrupt you, and the reason I'm doing so is just give me a minute. Let's cut across to Raj Thakre. Lots of political reactions coming in this morning. MNS. हा तर विषय आहेच पण आपलं मत व्यक्त करणं त्यापासून बाजूला हटणं हा काय पर्याय नाही होऊ शकत. साहेब 48 तासामध्ये अनेक नेत्यांवर हल्ले होताना बघायला मिळतात. महाराष्ट्रात असं कधी झालं नव्हतं मतदानाच्या आधी. हल्ले होताना अनेक देशमुखांवर हल्ला झाला. अपक्ष उमेदवारांवरती पण हल्ले झाले. तुम्हाला आठवत असेल तर माझ्या गुढीपाडव्याच्या सभेमध्ये मी असं म्हटलं होतं तेव्हा जे तुम्ही आजपर्यंत पाहिलं नाही अशा गोष्टी तुम्हाला या निवडणुकीमध्ये बघायला मिळतील. ते बघायला मिळतील. साहेब अभी तिथे उभा आहे महाराष्ट्रात आपले अनेक उमेदवार उभे आहेत. आपण नेहमी म्हणताय की यावेळेस सत्तेत मनसे असेल कसं परफॉर्मन्स पाहताय. झालं ना आता सगळ्या निवडणुका झाल्या आता मतदान सर काल जो प्रकार विनोद तावडेंच्या सोबत झाला त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं. काल विनोद तावडेंच्या सोबत जो प्रकार घडला भावनिक क्षण होता तो अमितजींसाठी आज तुम्ही मतदान केलं. पहिल्यांदा कुटुंबातल्या व्यक्तीसाठी मतदान करून निश्चितपणे वेगळा दिवस होता तुमच्या. मी खूप वेळा मतदान केलंय. बॅलेट मशीनवर चांगली गोष्ट आहे. तर एक वरळीत मनसेचं पत्र व्हायरल होत आहे. शिंदे तुमच्या नावाचं पत्र व्हायरल होत आहे आणि फेक पत्र असल्याचं कळतंय. मला नाही माहिती. तुम्ही कुठेतरी सकाळून काहीतरी बातम्या काढताना आम्हाला प्रश्न विचारता. माहित नाही मला. चला शुभेच्छा. We're going to try and get in a quick translation. We're going to try and get a reporter who can actually tell us what's going on where Raj Thakre is concerned. He came out and cast his vote speaking. His son also contesting this time where the Mahim constituency is concerned. We're going to cut across, get more reactions coming in thick and fast. But Matthew Anthony, many suggest that even after Haryana, possibly the Congress didn't quite learn the lessons it had to where candidate selection was concerned. Vidarbha was a seat that, could have been bolstered a region for the Congress especially. It saw a massive resurgence in 2024 Lok Sabha elections. And this time around, just on the basis of candidate selections, there could possibly be the Achilles heel for the Congress. Thanks, Preeti, once again, for giving me the opportunity. Let me complete what I was saying, that Vinod Tavde was betrayed by his own party men. And the whole episodes which are happening in Maharashtra, it is the Mahayuti which is desperate. You see the Vinod Tavde's episode, you see Fadnavis secretary giving liquor bottles in Wardha, you see making false allegations against Supriya Sule in the last moments. We are very cool, we are very comfortable, and I'll tell you the reasons why. Vidarbha, 80% of the electorates are OBCs and Dalits, which constitutes 21.5% of the assembly. Then we have North Maharashtra, which is consisting of the onion farmers, and we all know that the onion farmers of Maharashtra was replaced with special considerations for the Gujarat onion farmers, and the onion farmers of Maharashtra didn't had to face the export ban, whereas the Gujarat onion farmers got the export special provisions. When you come to Western Maharashtra, where the sugar and the other farmers are also there also we have an issue with the farmer community. 8,800 farmers have committed suicide in the last 3 years, and in this year, 996 farmers committed suicide. Now we come to Marathwada. We all know what are the reservation issues. So this consists of 73% of the total Maharashtra assembly, and we are comfortably there in that particular in this particular regions. Then comes the MMR and the Konkan, where we are equally fighting with the Mahayuti also. So what is there for us to be desperate? We are very comfortable in terms of forming a government. The fact is, okay, Matthew Anthony. Okay. Matthew Anthony, the question is, are you too comfortable? And possibly the Mahayuti that's been, especially after the Lok Sabha, has been making the amends, permutations, combinations, calculations, and possibly have their A game on going into this election. We're going to focus on that as well. But let's listen in to Nitin Gadkari first. खेती भी बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है
वो देश के लिए एक रोल मॉडल है और इसलिए महाराष्ट्र के विकास के लिए और यहाँ के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व यही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। आज हमारा चुनाव यानी लोकतंत्र का उत्सव है और मुझे सभी जनता से अपील करनी है कि वो किसी भी हालत में वोटिंग करे और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, उसका वहन करे और निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत। सर, भाजपा के लिए क्या माहौल देख रहे हैं आप? क्या आप 80 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं पूरे राज्य में? महाराष्ट्र में मेरा विश्वास है कि इस समय निश्चित रूप से हम लोग अच्छी मेजोरिटी मिलाकर चुनाव जीतेंगे। बहुत सारे नारे दिए गए, बटेंगे तो कटेंगे, उन नारों का भी असर है क्या जमीन पे? अभी सब छोड़ दीजिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को वोट देना और वोट जो है वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, महाराष्ट्र के भविष्य को। सर 10 साल से केंद्र में सरकार, सर 10 साल से वो कम नजर आया था। सर 10 साल से केंद्र में सरकार रही है भाजपा की, यह राज्य में भी है। आप इस बार जब महाराष्ट्र की 80 सभाएं आपने की है कम से कम, क्या आप लोगों में क्या देख रहे हैं, क्या डिफरेंट देख रहे हैं पिछले इलेक्शन? कहीं भी महाराष्ट्र में जाइए आपको कहीं भी विकास दिखेगा। सर चाहे महाराष्ट्र के सिंचाई प्रकल्प होंगे जो टेम्बू मैसाळ जैसे, वो 12,000 करोड़ में जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तब महाराष्ट्र को दिए। 6,000 करोड़ बड़ी राजा योजना में दिए, तो 50% से ज्यादा जिनका काम होकर बंद पड़े थे, और 6,000 करोड़ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में दिए। रोड तो आप हर जिले में जाके देखिए और पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर हमारी सरकार ने बदलाई है और मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को एक नई दिशा दी है और महाराष्ट्र की सरकार और हम मिलकर डबल इंजन की सरकार आएगी और महाराष्ट्र प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न होकर महाराष्ट्र की जनता की पूरी अपेक्षा। 23 तारीख को सर ज्यादा अभी तक इसलिए मैं सबको आह्वान करता हूँ कि लोकतंत्र का ये उत्सव में आपका अधिकार है वोट करने का। आप बाहर आइए और वोट करिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग प्रोसेस। आपण खूप मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला, 75 पेक्षा जास्त सभा घेतल्या, काय पाहताय महाराष्ट्रात? महाराष्ट्रामध्ये यावेळी जवळपास सगळ्या जिल्ह्यात होण्याची मला संधी मिळाली आणि मला विश्वास आहे की महाराष्ट्राची जनता महाराष्ट्राचं भविष्य बदलवण्याकरता निश्चितपणे महायुतीच्या मागे ताकदीने। कैंडिडेट सर, जहाँ कैंडिडेट की बात होती है, नितिन गडकरी का नाम सामने आता है। कैंडिडेट क्या कब तक नितिन गडकरी की जैसे पहचान बनाना है? एक बड़ा सवाल है। Got it. All right, those visuals coming in from Nagpur, Devendra Fadnavis along with his mother and wife going into vote. Piyush, my colleague who's been tracking the election very closely where the 6 seats of Nagpur is concerned, and Fadnavis' own seat, the Deputy Chief Minister, once again coming in from the Vidarbha region, the movers and shakers across party lines, many of them facing off in the battleground of Vidarbha. But Piyush, the Deputy Chief Minister seemingly confident, especially after what seemed like a controversial evening last night where charges flew on terms of cash for vote and also sabotage between where the BJP was concerned. Well, certainly, Preeti, we are also getting these live pictures coming in from Nagpur where Devendra Fadnavis has just come out after casting his vote. You can see the live visuals of his wife and mother. Remember that yesterday, like you rightly mentioned, that yes, there were allegations of cash being recovered there at the particular location where Vinod Tavde was present. But BJP has rubbished these allegations. Let's try to understand from Devendra Fadnavis itself, on these allegations, though he has just come out after casting his vote. Sir, kya kahenge? Sir, Devendra sir. So he's going to speak to media outside because there are restrictions inside the polling booth center. So we'll try to get in a word from Devendra Fadnavis, Preeti. All right, and you cut across there. I'll give you 5 minutes. You get in there, and once you have Devendra Fadnavis, the Deputy Chief Minister, we're going to connect with you on that. But I myself have been in the southwest Nagpur constituency of Devendra Fadnavis. Fair amounts of support this time around. His team hoping that the margin of victory is more. A few seats, of course, viewers across Maharashtra, cutting across party lines, will be a given, and this is going to be one of those seats. But off late, not without controversy where Devendra Fadnavis is concerned. Pradeep Bhandari, what is the internal murmur within the BJP that what happened with Mr. Tavre late
in the evening yesterday actually stemmed from internal sabotage and a lot of fingers internally pointing to nobody else but the Deputy Chief Minister's chair, where he had to actually come out, Devendra Fadnavis, and defend Mr. Taude. Well, Preeti, these questions are matter of speculation, and I do believe that the Congress does not know the Bharatiya Janata Party better, and my friend from the Congress Party was knowing more of the BJP than he knows of the Congress Party. Had he paid more attention to the Congress Party, he would not have taken 55 relaunches of Rahul Gandhi. On Mr. Tavde's point, we are absolutely clear, Preeti. We are open to any investigation. It's a matter of conspiracy. There was no personal possession in front of with Mr. Tavde. None of the individuals who are claiming to have a bag of 5 crores with Mr. Tavde been able to prove. In fact, a crore of bag is worth more than 20 kgs is what a lot of experts say. So where is that more than 100 kgs of cash? Because the India Alliance need to suggest, because their leaders have got cash worth more than 300 crore. So let the people, we are open to investigation. The EC is investigating, and even the FIR which is registered, the FIR is not on cash, it is on alleged model code of conduct violation. Pradeep, on the part, I apologize, I'm going to cut you short. Devendra Fadnavis speaking right now, right after casting his vote. We're going to come in back to our panelists. Listen in. सर्वांनी मतदान करा. लोकशाहीमध्ये आपण सरकारकडून अपेक्षा ठेवतो. त्या अपेक्षा ठेवत असताना जो मतदान करतो त्याला जास्त अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आपल्या सरकारकडून आपल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता सर्वांनी भरभरून मतदान करावं अशी माझी सगळ्यांना विनंती. मतदारांमध्ये एक वेगळा उत्साह पाहायला मिळतो. पुढे जसं बोललं तर टक्का वाढेल, कशा प्रकारे बघता तुम्ही? मला निश्चितपणे वाटतं याचं कारण एकतर लोकसभेमध्ये याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ होता, काही प्रमाणात तो कमी झालेला आहे. दुसरं, लोकसभेच्या वेळी वोटिंगची सिस्टीम ही अत्यंत स्लो होती, ज्याच्या तक्रारीनंतर आम्ही केल्या. त्यामुळे आता सिस्टीममध्ये देखील इम्प्रूव्हमेंट करण्यात आलेली आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, लोकसभेसारखं रणरणत ऊन हे आता आज नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की निश्चितपणे टक्का वाढेल. लाडक्या बहिणी पण जास्त संख्येने निघाल्यामुळे वाढू शकतो टक्का. मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात आपण नेहमी पाहतो, इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रामध्ये महिलांचा टक्का हा 5 ते 6% कमी असतो पुरुषांपेक्षा. मला असं वाटतं की यावेळी निश्चितपणे आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणी ज्या आहेत त्या मतदान करतील आणि ही जी टक्केवारी आहे त्यातला जो फरक आहे तो भरून काढतो. Women's voting has been low in compared to the men's, but this time because of Ladki Bahin scheme, will definitely vote in large number. नाही, हास्य म्हणजे जनतेचं प्रेम जेव्हा मिळतं तेव्हा चेहऱ्यावर हास्य असतं. ते प्रेम मिळताना दिसतंय म्हणून चेहऱ्यावर हास्य आहे. काही घटना घडल्या. Whenever people love you, we can smile, and this is the secret of my smile. ज्या घटना घडल्या त्यावरनं काय अनेक उमेदवारांनी काही प्रयत्न केले. काटोलमध्ये अनिल देशमुखांचं जे प्रकरण आहे दगडफेक आहे, त्याच्यावर कालच बोललेलो आहे आणि ते किती फेक आहे हे काल एसपी आणि आयजींनी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि पूर्ण घटनाक्रम, त्याचे व्हिज्युअल्स आणि त्याचा I have spoke about the Katol's incident yesterday. It was completely fake. SP and IG have taken a press about it, and they have also said the same thing about it. मागून गोटा समोर येऊन लागलेला होता आणि तरी देखील फक्त स्क्रॅच आली होती. त्याच्यामुळे त्यात काय होतं आता सगळ्यांना समजलेलं. नाना पटोले big stone has been hit on his car, but only scratch has happened to his car, nothing else. So it is likely to be a fake one. योग्य इन्क्वायरी झाली पाहिजे. काय यात खरं आहे हे सर्वांसमोर आलं पाहिजे, कारण आरोप गंभीर आहेत. अशा गंभीर आरोपांची सखोल चौकशी होऊन त्यातलं सत्य बाहेर येणं. That the detailed inquiry should be conducted in this incident, and the truth should be come out of before the people. लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है. महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान
ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें, ऐसी मेरी सबको प्रार्थना है। Serious allegations were raised against Vinod Tawade yesterday. Then later, timing has been very interesting. Supriya Sure and Nana Patole, their audios were circulated by BJP itself. Top BJP spokesperson has also taken the press conference. How do you look at the timing as well as the allegations raised by BJP? जहां तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज किया गया। जहां तक सुप्रिया सुळे जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं The kind of allegations one former IPS officer have done about Supriya Sule and Nana Patole, these are very serious allegations, and fair inquiry should be conducted in this incident. इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके। और इन्होंने 2010 में आईपीएस छोड़ करके एक कॉरपोरेट सेक्टर में ज्वाइन किया, केपीएमजी में ज्वाइन किया और वहां बकायदा एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने काम किया। 2018 में महाराष्ट्र में एक क्रिप्टो करेंसी साइबर फ्रॉड, ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है उसका एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। उस फ्रॉड में इन्वेस्टिगेशन के लिए उस समय इस व्यक्ति को, जिनका नाम रविंद्र नाथ पाटिल है और उस समय आईपीएस छोड़ करके वो केपीएमजी में थे, उनको एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में लगाया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए आखिर क्या हुआ है। बाद में 2018 के इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हुआ कि 2022 में ये खुद अरेस्ट हो गए, रविंद्रनाथ पाटिल जो थे, कि कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ है उसमें कुछ बिटकॉइंस थे, ये बिटकॉइंस गायब हो गए और उसमें आपका हाथ है, आपको हम अंडर ट्रायल जेल में 14 महीने डालेंगे। येरवड़ा जेल में 14 महीने तक एज अंडर ट्रायल वो रहे। और पूरी कहानी उस समय से शुरू हुई, जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस पूरे विषय को गहनता के साथ अध्ययन किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे जेल में डालना पड़ा। ये पुणे के आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे। पुणे में और 2 आईपीएस ऑफिसर थे, पुणे के पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और पुणे की डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर भाग्यश्री नौटके। ये 2 भी आईपीएस ऑफिसर हैं। बाद में मालूम पड़ा कि जब 2018 का ये क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ था तो एक क्रिप्टो करेंसी का वैलेट मिला था। जैसे हमारा वैलेट होता है ना, पर्स होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, तो क्रिप्टो वाले भी एक वैलेट करते हैं, उस वैलेट में वो पैसे रखते हैं, बिटकॉइंस रखते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का हार्डवेयर वैलेट मिला था, ये वैलेट कंप्यूटर में होता है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो वैलेट मिला था उस वैलेट में करोड़ों के भाव में बिटकॉइंस थे, करोड़ों रुपए थे। तो ये जो पुलिस कमिश्नर पुणे के अमिताभ जी हैं, अमिताभ गुप्ता, अब रविंद्र पाटिल जी का कहना है कि अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री जी ने मिलकर उस असली वैलेट को वहां से हटा दिया जिसमें करोड़ों रुपए थे और एक नकली वैलेट वहां रख दिया जिसमें पैसे नहीं थे, और ये करोड़ों रुपए को इन दोनों आईपीएस अधिकारियों ने हथिया लिया और उसमें रविंद्रनाथ पाटिल जी का नाम जोड़ दिया कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया है, और बाद में ये रविंद्र पाटिल जो है ये जेल चले गए। अब जब ये रविंद्र पाटिल और उनके कुछ साथी इस मिस अप्रोप्रिएशन के केस में जेल जाते हैं तो उनके खिलाफ गवाही देने वाला एक व्यक्ति होता है, वो भी एक साइबर एक्सपर्ट होता है, और वो एक सारथी नामक कंपनी में काम करता है। उसका नाम है गौरव मेहता। अब ये गौरव मेहता भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है,
14 महीने जेल में रहने के बाद जब ये छूट के आते हैं आईपीएस ऑफिसर, अचानक 2-3 दिन पहले गौरव मेहता जी का बार बार फोन जाता है रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास। 4-5 घंटे वो अवॉइड करते हैं, फोन उठाते नहीं, मगर 4-5 घंटे के बाद रविंद्रनाथ पाटिल गौरव मेहता, जो उन्हीं के खिलाफ विटनेस था, जो इस केस का एक एक्सपर्ट है, तो उसका फोन उठाते हैं। सिग्नल नामक जो हमारे पास एक ऐप होती है, सिग्नल में ये सारी चीजें हो रही है। जब ये फोन उठाते हैं तो गौरव मेहता उन्हें बहुत सारे ऐसे खुलासाओं के विषय में बताता है जो एक गंभीर मोड़ आज ले रहा है। गौरव मेहता बोलता है रविंद्रनाथ पाटिल जी से कि रविंद्रनाथ पाटिल जी, आप जो 14 महीने जेल गए थे, आप चोर नहीं थे, आपने गड़बड़ी नहीं की थी, आपको फंसाया गया था। किसके द्वारा? अमिताभ गुप्ता, जो कि आईपीएस हैं और जो कमिश्नर हैं पुणे के, और भाग्यश्री द्वारा। असली वैलेट उनके पास है, उनके माध्यम से आपको फंसाया गया। और उनके ऊपर भी एक लेयर है जिसमें नेतागण है, और उसमें सुप्रिया सुले और उसके साथ साथ नाना पटोले जी भी हैं। तो इन्हें विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं पहले भी मेरे साथ इस प्रकार का वाकया हो चुका है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है गौरव मेहता। तो जो रविंद्रनाथ पाटिल है वो गौरव मेहता जी से कहते हैं कि आप कुछ सबूत है तो भेजिए, वरना मैं इस बात को कैसे मानूं। तो गौरव मेहता बहुत सारी ऑडियो क्लिपिंग्स सिग्नल के माध्यम से रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास भेजते हैं। और ये जो ऑडियो क्लिपिंग्स हैं, ये ऑडियो क्लिपिंग्स जो मार्केट में चल रही हैं, आप सबने सुनाया भी है, बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित करती है